Hello, Assalamu alaikum, my dear students. How are you, everyone? Today we start the unit 4, trash to treasure. Trash means thrown away or leftover things. जो बचे हुए चीज़ होते हैं वो हम फेंकते हैं वो. Treasure means here के मेकिंग अ यूजफुल थिंग, यानी कि जो बची हुई चीज़ है जो हम उसको फेंक देते हैं, मगर अब उसे कुछ ऐसी चीज़ बनाए वी कैन यूज सेकंड टाइम. मीन्स लाइक एन आर्ट वर्क, अ वेस्ट, अ लैम्प सेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट वी आर थ्रो. ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो वॉट एवर वी थ्रू आउटसाइड हम उसको फेंक देते हैं, बट हम ट्रीजर मीन उसको एक यूज लाइक जैसे हम बना सके उसको. तो हियर वी डिस्कस अबाउट द यूनिट नंबर 4, ट्रैश टू ट्रीजर. In activity 1, this unit is about the reusing or recycling things instead of just throwing them away. This art was made with many things. यहाँ एक सब कुछ the make the one art यानी कि एक बनाया गया है and use the different types of things. Look carefully and name as many things as you can make a list. Means whatever show in these pictures you write down. आपको ये पिक्चर्स में जो भी चीज़ दिखाई दे रही है वो आपको लिखना है. एंड ऑल्सो यू गिवन कि हाउ मेनी डिफरेंट थिंग्स डिड यू नेम कंपेयर विथ अ क्लासमेट. डू यू हैव द सेम नंबर, डिड यू मिस समथिंग और क्लासमेट. सो ओनली सो हियर यू राइट डाउन. आपको यहाँ सिर्फ इतना ही रहेगा. आपको यहाँ पिक्चर में जो भी वॉट एवर यू सी इन दिस पिक्चर्स यू राइट डाउन नेम. फॉर एग्जाम्पल toy frog, button, safety pin, different types of things. Whatever you find here, so you write down here. Okay. Activity 2. Here also one interesting story कि a new dish part 1. Dish से समझ लेके कुछ खाने की चीज हो, बराबर. ठीक है. A new dish part 1. Once the Maharaja of Travancore ordered a huge dinner in his place for many important peoples. Man, here is one story about the Maharaja of the Travancore who ordered the huge dinner in his place for the many important people. यानी कि अपने यहाँ एक बड़े बड़े लोगों को दावत के लिए उसने इनवाइट किया. The afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to see what the dishes were being prepared for his guests. Means before the start the lunch, the Maharaja visited to the kitchen कि which type of dish completed for their guest. उनके गेस्ट के लिए कौन सी डिश बनी हुई है वो देखने के लिए किचन में गए. After what happened? The feast was nearly ready. The king was happy to see the rice, pickles, chutneys and breads. Then the king noticed a basket full of many small pieces of vegetables that no one was using. Also, when the Maharaja entered in the kitchen, he saw that in a one small bucket there are different pieces of the different vegetables. छोटे छोटे पीस पड़े हुए थे. And the Maharaja noticed that कि no one was using. इसका कोई इस्तेमाल नहीं करते थे. Suddenly the king यानी कि महाराजा asked the head cook, what will you do with all these vegetable scraps? यानी कि ये जो यानी कि small pieces जो उसने छोड़ दिया था. अब why, what, how to use this? उसका क्या करोगे? What will you do with all the vegetables small pieces? So what the cook replied? They are washed. We will throw them away. ये wash हो चुके हम उसको बाहर फेंक देंगे. We should not wash all these vegetables. The Maharaja said. The king said, we are not waste all these things. Find out a way, use them, and he commanded. Then he turned and left the kitchen. जाओ, order, do not waste. उसको waste नहीं करना है, waste नहीं करना है, उसको फेंकना नहीं है. You make a one new dish. एक अलग प्रकार के डिश बनाओ and use and mind it how to make a dish. अब उसका क्या बनाना है वो फाइंड करो और बनाओ. This is my order. Don't waste all the vegetable scrap. Now the cook was worried. चिंता में आ गए. महाराजा यानी कि किंग का ऑर्डर है, हम उसको फॉलो करना ही पड़ेगा. He started at the scrap and thought there was only a little yam, plantain, cucumber and potato. There was a carrot, a few beans and a few chilies. He only had a small amount of everything except for one thing. Outside he had a whole tree full of ripe
कौतूहल, यानी कि वहाँ बैठ के वो सोचने लगा कि अब उसकी चीज़ को हमें क्या बनाना है, क्योंकि राजा ने यानी कि किंग ने ऑर्डर दे दिया है तो हम उसका किसी भी हालत में कुछ भी बनाना पड़ेगा। और उसने बाहर देखा तो एक कोकोनट का जड़ था, वो पूरी तरह से राग यानी कि पका हुआ था। न्यू वर्ड्स, तो आपको अपने नोटबुक में लिखना है न्यू वर्ड, स्क्रैप स्मॉल पीसेस लेफ्ट ओवर, यानी कि ऐसी चीज़ जो छोटे छोटे टुकड़ों में हम छोड़ देते हैं। एक्टिविटी 3, in the story the new dish, two people speak. Okay, first the king asks the head cook, what are you going to do with all those vegetable scrap? They are second person who are talking with the market, they are waste sir, we will throw them away. The cook replied, we should not waste all these vegetables. The Maharaja said, find a way you use them, he commanded, यानी कि he ordered. How does the punctuation show you that the character is speaking and asking a question? Notice and copy all the quotation marks and the question marks for the characters question. तो आपको ऐसे लेसन में सिर्फ फाइंड करना है, इन्वर्टेड कॉमा वाला वो सब फाइंड करना आपको लिखना है। द किंग आस्क्ड द हेड कुक, व्हाट आर यू गोइंग डू विथ ऑल दोज वेजिटेबल स्क्रैप? दे आर वॉश सर, वी विल थ्रो देम, यानी कि वैसे आपको अपने नोटबुक में लिखना ऊपर जैसे वैसा। Show your sentence to a classmate. Work together to look closely at the sentence in the story and to look closely at your own sentences. Work together, make sure each sentence is correct. So here we are not compare our classmate because here online. So only by own self you write down. Okay? आपको सिर्फ वो कॉमा वाला इन्वर्टेड कॉमा वाला ही सेंटेंस आपको लिखना है, आपको किसी के साथ कंपेयर करना नहीं है। Did you both get all the punctuation correct? If not, what can you change to correct it? So here we are not complete this answer because of this time we are not compared with our classmates. Inshallah, whenever our school means whenever your offline classes start, after you are compare whatever you are right. यहाँ ऊपर आपने जो लिखा है वो अभी कंपेयर नहीं करना है, अगर जब ऑफलाइन शुरू होगा यानी कि जब स्कूल शुरू होगी तब आपको कंपेयर करना है, अभी सिर्फ आपको लिखना है। ओके, आई होप समझ में आ गया आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लिखना है। यहाँ ऊपर ये नीचे वाला जो है डिड यू गॉट गेट द पंक्चुएशन करेक्ट, आपको अपने क्लासमेट के साथ अभी कंपेयर करना नहीं है। ओके, नेक्स्ट। Imagine that the head cook asks one of his helper what he should do with the vegetable and that the helper make a suggestion. Work with a classmate to write a new question and answer. Be careful the punctuation that you see in the story. So this activity also you are not completed right now. अभी भी आपको यहाँ complete नहीं करना है, but because of you are asked your classmate, हमें यहाँ अपने classmate की help करना है, एक दूसरे के साथ क्वेश्चनिंग करना है, तो ये भी अभी पॉसिबल नहीं है। सो ऑल्सो दिस एक्टिविटी यू आर नॉट completed. Activity 4, afterward, ठीक है, the story list the vegetables that the cook had in the basket of scrap. There was only little bit of yam, plantain, cucumber and potato. There was a small carrot, handful of green beans and a few chilies. Find the other sentence in the story that makes a list. Notice the punctuation that separate the word in the list. Look carefully at the stage sentences and make a new sentence that lists at least 4 items you have in your home. तो आपको यहाँ ऐसी जो चीज़ है, जो बचे हुए चीज़ है जो आपको बनाना है घर पे, ऐसी कुछ खाने की जो छोटी छोटी छूट जाती है तो आपको एक इकट्ठे करना है और एक बनाना, उसको नया डिश बनना है। तो आपको ये घर ऐसे बनाना है, बराबर। ऐसी बहुत सारी चीज़ है कि इन माई होम देर आर a sofa set, a dining table, a chair, some cupboard, loft and racks for books. So share your list sentence with your classmate. तो ये भी आपको सिर्फ लिखना है। मैंने अभी बोला कि in my home there are a sofa set, a dining table and chair, some cupboards, lofts and racks of books. ये आपको सिर्फ बनाना है। आपको अपने क्लास यहाँ क्या लिखा है कि share your list sentence. Here you cannot say because of this is also activity, complete the activity in a class. ये भी activity class में करना है तो अभी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ समझना है आपको। Just understanding. Work together to look closely at the sentences in the story and look closely at your own sentences. Work together, make sure each sentence is correct. Did you both get all the punctuation correct? If what? So आपको सिर्फ एक लिस्ट बनाना है कि आपके घर में क्या क्या चीज़ है, आपको ये कंपेयर करना नहीं है या शेयर करना नहीं है। ओके, अब एक्टिविटी 5,
कि when the Maharaja visit in activity 3, we discuss about activity 2. Okay, when the Maharaja visit in the kitchen, he saw that there is small scrap of vegetables in a dustbin. There is no use. So though he ordered to the head of the cook, okay, you make the one things. Do not waste या do not throw outside the windows को बाहर फेंकना नहीं है, उसको एक नई डिश बनानी है. After what happened when the king ordered to the head of the cook, they start the work. What we do, अब उसको हमें क्या करना है. तो what they do? So the cook step outside, look up at the tree and suddenly he had a one idea. यानी कि जब वो बाहर देखता है कोकोनट का ट्री, वहाँ जाके उसको देखता है तो नई आइडिया आती है उनके दिमाग में. तो he took all the vegetable dish, wash them, उसने जो बची हुई वेजिटेबल उसको लिया, वॉश किया, clean them well and cut them into a long stripe. He put them all into the used pot and placed it on the fire to the cook. यानी कि एक बड़ा सा pot में रखा और उसको फायर के नीचे रखा बनाने के लिए. Next he ground the fresh coconut, उसने जो fresh coconut उसको लिया and he added the green chilies, garlic and some salt. Soon the vegetable were all the cooked. He fried the coconut and plenty of curd poured and some coconut oil, sprinkle it all the with curry. यानी कि बहुत सारा उसमें अलग अलग प्रकार के दही डाला, करी यानी कि ब्रेसलेट यानी कि अलग अलग प्रकार की जो सॉस थे उसने उसके अंदर डाला और एक परफेक्ट डिश बना दी. So the new dish was ready. इसने एक नई डिश बनाई. The cook served his invention to the guests that evening. यानी कि जो बची हुई सब्जी था, जो डिश बनाई थी, वो सब जो मेहमान थे किंग के जो गेस्ट थे उनको सर्व किया यानी कि उनको दिया. The guests love it. सबको बहुत पसंद आया. The king liked it so much that gave the cook beautiful gold bracelet as a reward. यानी कि जो बची हुई सब्जी थी वही डिश सबको पसंद आई. And the king also very happy and he given the reward. Which reward? He given the gold bracelets to the head of the cook because ये जो डिश थी जो उन लोगों को फेंकने वाले थे उसमें से जो एक नई चीज बनाई वही डिश सबको बहुत पसंद आई. इसलिए the king also very happy. Everyone was eager to know the name of the dish. The cook thought and thought. बोला कि ये डिश का नाम क्या है. The head of the cook also don't know. They also thinking. उसने भी सोचना कि अब मैं उसका क्या नाम दूं. And at the last, what could he call this mixture of many things? So now he thought it the name the dish Avial. उसने क्या नाम दे दिया? Avial. क्या नाम दे दिया? Avial. सबको बता दिया कि the name of the dish is Avial. So Avial became the famous all over Kerala and is now one of the dishes in the traditional feast of Kerala. Isn't it amazing? Amazing that is the all came from the basket of scrap and a good idea. देखो यानी कि ये फेंकने वाले थे और वही डिश उसने वो कुक ने बनाया और पूरे केरला में फेमस हो गया. So what we do in our life also कि we are never the scrap of the vegetable. यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज है we are not throw outside. उसको फेंकना नहीं है पर उसको एक नया बनाना है. So if possible, if the famous, we also famous in the world. So today we discuss about only activity 1 to 5 and I hope you understand very well and whatever you are saying you complete it in a textbook and also in a notebook. So next activity means activity 6, 7, 8 we are learn in a next video. Okay, thank you. Allah Hafiz.